Hi kids, welcome to your English class and I am your digital teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Literary Journeys, an English reader for class 5 by Brain Root Publications. So far we have finished 5 lessons of this book and today we are about to begin with lesson number 6, that is The Caged Bird. Children, do you love to be restricted all the time? अगर आपके मूवमेंट को कोई रेस्ट्रिक्ट करेगा क्या आपको पसंद है? ऐसे ही एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी आजाद रहना पसंद है। उनको भी किसी भी तरह के बंधन में रहना पसंद नहीं रहता, स्पेशली बर्ड्स को। बर्ड्स जो हैं वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ना पसंद करती हैं और उनको पिंजरे में कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। आइए आज एक चैप्टर पढ़ते हैं जहां ऐसे ही एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जिसने एक केज्ड बर्ड को रेस्क्यू किया है। So let's get started with the chapter. Nobody likes to be in cages or under any restrictions. Then why are we doing the same with innocent and speechless birds and other animals? This story will give us a new point of view. So let's read this story. Anant was the most popular boy in the school and his locality as well. So the main character of the story is a small boy named Anant. अनंत जो है अपने स्कूल और अपने घर के आसपास बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा पॉपुलर था। He always stood first in the class. In sports too, he was a champion. As a result, he had a lot of friends. अनंत पढ़ाई में भी अच्छा था और खेल कूद में भी। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, इसीलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसके कई सारे दोस्त थे। अनंत had developed a hobby of collecting different kinds of birds. He spent most of his pocket money on buying them. अनंत का एक ही शौक था, वो था डिफरेंट वेराइटी ऑफ बर्ड्स को कलेक्ट करके अपने घर में रखना। वो ऐसा ही करता था, जो भी पॉकेट मनी उसको मिलती थी उनसे वो नए नए बर्ड्स खरीद के ले आता। One of the rooms of his house and the veranda were full of bird cages. He took great interest in feeding and looking after them. वो उनका बहुत ध्यान रखता और उनको टाइम पर खाना देता, उनके साथ टाइम वक्त स्पेंड करता और कोशिश करता कि उनके साथ हमेशा बहुत अच्छे से पेश आए। The amusing and funny movements of the birds, their chirping and twittering thrilled him and his friends. His house looked like a mela all the time. If his younger sister ever protested, Anant turned a deaf ear to her objection. कई बार अनंत की जो छोटी बहन है वो उसे ऐसा करने से मना करती थी। वो कई बार बोलती कि भैया इतने सारे पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अनंत कभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि अनंत को ऐसा लगता था कि वो तो इन पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इनफैक्ट उनको घर पे रखकर उनका देखभाल कर रहा है, उनको खाना दे रहा है और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। However, his parents did not like it, but they did not object because Anant was an obedient and hard-working child. अनंत के पेरेंट्स को भी ये बात पसंद नहीं थी। वो भी जानते थे कि इस तरह से पक्षियों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो अनंत को डांटते नहीं थे क्योंकि अनंत एक अच्छा बच्चा था और अपना काम भी बहुत अच्छे से कर लेता था। Their neighbors were worried because their children spent most of their time in watching the birds. The guardians had no idea how to solve this problem. The children were simply fascinated by the antics of the birds. अब अनंत के आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी थे, वो भी परेशान हो गए। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि सभी बच्चे दिन भर उन बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे। वो बर्ड्स अलग अलग तरह की करतब करते और वो सब उन्हीं में उलझे रहते। सभी लोग चिंतित थे कि क्या किया जाए, बच्चों को इन बर्ड्स से कैसे दूर लाया जाए। One Sunday morning, Anant's parents told him that they had to visit a relative living in the town. They wanted to Anant accompany them, but he showed his reluctance. Anant wanted to spend the day with his friends and fowls. His parents agreed but warned him that he should not go outside the house. एक बार अनंत के घर एक इनविटेशन आया और अनंत के पेरेंट्स को आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। उन्होंने अनंत को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अनंत
माना नहीं। उसने रिक्वेस्ट की कि मम्मा पापा मुझे आप यहीं रहने दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। अनंत के मम्मी पापा मान गए, बस उन्होंने कहा कि अनंत तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, देखना कुछ भी गड़बड़ ना हो। They would lock the main entrance as there had been frequent incidents of daylight burglary as well as child lifting. पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, हम बाहर से दरवाजा बंद करके जाएंगे और तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि आजकल कई तरह की चोरियां हो रही हैं, दिन दहाड़े लोग चोरी कर रहे हैं और छोटे बच्चों को भी किडनैप कर रहे हैं। Anant agreed most willingly to comply with their orders and called all his friends to his home. His mother prepared food for Anant and his friends and left home at 10 a.m. after locking the house from outside. अनंत की मम्मा ने उसका मनपसंद का खाना बना के अच्छे से तैयार कर दिया और 10 बजे वो घर से निकल गई, घर को लॉक करने के बाद। For Anant and his friend, it was a great day because there was no one to stop them from having fun and frolic. अब अनंत के फ्रेंड्स और अनंत तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि आज उनको दिन भर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, वो सारे दिन मौज मस्ती कर सकते थे। They sang and danced, played and jumped as they liked. At 1 p.m., they remained through the refrigerator and kitchen drawers and ate their full. Then they watched the activities of the bird. They enjoyed their chirping and fluttering of wings. Gradually, the pleasure began to wear off. Soon it was 3 p.m. The younger ones got tired of all this and wanted to go home. To their disappointment, the house was locked from outside. अब दिन भर अनंत और उसके दोस्तों ने खूब मजे किए। वो यहाँ वहां उछल कूद करने लगे, सारे दिन खेलने लगे। फिर 1 बज गया तो उन्होंने खाना खाया और फिर वो बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। काफी देर ऐसा ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, सब थक गए और सब बोर भी होने लगे। अब छोटे छोटे जो फ्रेंड्स थे वो लोग घर जाना चाहते थे। वो सभी बच्चे घर जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन घर जा नहीं सकते थे क्योंकि दरवाजा तो बाहर से बंद था। Once again they engaged themselves in playing hide and seek. Without that too, they did not entertain them for long. अब कुछ देर तो वो खिड़की के बाहर देखने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बच्चों ने सोचा क्यों ना हाइड एंड सीक खेला जाए, छुपन छुपाई खेली जाए। उन लोगों ने छुपने और ढूंढने का गेम खेला, लेकिन वो भी बहुत जल्द खत्म हो गया क्योंकि वो उससे भी बोर हो गए। अब तो वो 4 बजे पूरी तरह से थक चुके थे। It was 4 p.m. yet there was no sign of Anant's parents. Forgetting everything, the children waited silently for them to return. Anant initiated a quiz for a magazine while the others guessed the answers. This way, time passed and soon it was evening. Now they all looked towards the road, but it was deserted as ever. Anand tried his best to pacify them, but some had tears in their eyes and some were on the verge of crying. All of a sudden, Anand's eyes fell on the cages. He felt that he was too like the birds in the cage. अब अनंत ने कुछ देर क्विज सेशन किया, उस देर उससे टाइम बीत गया। अब शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन अनंत के मम्मी पापा अभी तक घर नहीं लौटे थे। सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अनंत के मम्मी पापा लौटेंगे और वो सब अपने घर वापस जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऑलमोस्ट रोने वाले थे, किसी किसी की आंखों में आंसू भी आ गए। वो अब इस तरह से बैठ नहीं सकते थे। अनंत को तब अचानक एक ख्याल आया कि उनकी हालत कुछ आज उन पंछियों की तरह ही है जिन्हें वो पिंजरे में बंद करके रखता है। At about 7 p.m., Anant's parents returned. They had been caught in a traffic jam and were therefore delayed. अनंत के पेरेंट्स 7 बजे घर वापस आ गए। वो काफी देर से पहुंचे क्योंकि वो एक ट्रैफिक जैम में फंस गए थे रास्ते में। The children beamed with joy on their arrival. As soon as the front door was unlocked, the children rushed to their homes. जैसे ही सामने वाला दरवाजा खुला, सभी बच्चे जो है भागते हुए अपनी घरों की तरफ दौड़े। The next morning, Anant got up very early and set all the birds free. When his mother asked the reason for sudden change, Anant explained, "Mummy, yesterday for the first time I learned what it was like to be imprisoned. We were inside the house only for some hours. Imagine the distress of the birds
who are caged all the time, so I have freed them. अगली सुबह जब अनंत उठा तब उसने सबसे पहला काम क्या किया, सारे पिंजरों को खोल दिया और सभी पक्षियों को उड़ा दिया। उसकी मम्मा तो हैरान हो गई। उन्होंने अनंत से पूछा, अनंत क्या बात है, आज अचानक तुमने सारे पक्षियों को हवा में उड़ा दिया? तुम तो ऐसा नहीं करते, तुम्हें हमने कितनी बार समझाया लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब अनंत ने कहा, मम्मा कल जब आप देर से लौटी तब मैं पहली बार समझ पाया कि बंधन में रहने का क्या मतलब है। जब आप बाहर जाना चाहते हो और आप बाहर नहीं जा पाते तो बहुत ज्यादा दुख होता है। हम तो कुछ घंटों के लिए बंद हुए थे घर में तो हम परेशान हो गए। सोचो इन पक्षियों को कितना बुरा लगता होगा जो दिन भर इस पिंजरे में रहते हैं। तो इसीलिए आज मैंने इन्हें आजाद कर दिया। His mother embraced him most affectionately and said, thank God you have realized the importance of freedom, haven't you? Yes, Anant nodded his head with a smile and ran outside. तो अनंत की बातें सुन के अनंत की मम्मा ने अनंत को गले से लगा लिया और कहा, अब अनंत तुम्हें आजादी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है ना? अनंत ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और जल्दी से घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। Now children, let's go through the glossary section. Certain words that we came across in the chapter, let's understand their meaning once again. Feeding means खाना खिलाना यानी to give food. Twittering means the sound of words, चिड़ियों का चहचहाना. Thrilled means very excited and pleased. Protested means strong disagreement. Guardian means one who looks after a child. Fascinated means attracted. Antics means tricks. Reluctance means unwillingness. Frequent means happening often. Burglary means illegally entry for theft. Unwillingly means with one's will यानी अपनी इच्छा से. Fun and frolic means मस्ती करना यानी enjoyment. Wear off means gradually disappear. Entertain means to please. Pacify means to calm down. Verge on the limit of beyond, something will happen. Being happy, rushed, moving fast. Embraced means to hug someone. And last is affectionately, with affection. Alright, now it's time to do the exercises, so let's do them. The first exercise that we will do is MCQ. So let's get started. First one, Anant had developed a hobby of collecting different kinds of flowers, stamps, birds, storybooks. So he had a hobby of collecting different kinds of birds. He was fond of birds now, so he collected birds. Second, Anand's house looked like a school, hospital, exhibition, mela, so mela is the correct option. Anand wanted to spend the day with his friends, sister, parents or neighbor. He wanted to spend the day with his friends. Alright, so I hope children that you have done these answers. Now let's proceed further to the next. Next exercise says fill in the blanks. And for filling the blanks, we have an help box where different words are given. We need to take the help of these words and then complete these sentences. So let's take them one by one. One of the room in Anand's house and the veranda were full of bird cages. Next, the amusing and funny movements of the birds were dash and dash. So were chirping and twittering. Next, the children were simply fascinated by the antics of the birds. Anant was an obedient and hardworking child. Fifth, it was 4 p.m. yet there was no sign of Anand's parents. Alright, so children, I hope that you have filled all the exercises, you have completed all the sentences. Now it's time to move further. आगे बढ़ते हैं. It's now time to do exercise number C. In exercise number C, we need to find out which
statement is true and which statement is false. Let's read the sentences carefully and then mark them as T or F. तो आइए एक एक करके करते हैं. Anand was the most popular boy of the school. Yes, it is true. Next, a room and a veranda in his house were full of furniture. No, it is false. It was full of cages. Third, he did not like the melodious chirping and twittering of birds. This is false. Anand initiated a quiz from a magazine for his friends. Yes, this is true. Anand got up early and set the birds free. Yes, this is also true. Anand's mother embraced him the most. Yes, this is also true. So I hope that children, you have completed all the exercises and you have enjoyed the session today. You have read the chapter carefully and you have understood that freedom is important for any living creature. Okay? So with this, we come to an end to today's session. I will meet you soon again with a new video of this book where we will read another interesting chapter and learn some important values. Till then, take care of yourself. Bye bye.